हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर फंक्शनल एनालिसिस का हुआ था उसमें हमने कुछ एक इनइक्वालिटीज डिस्कस करी थी। सो आज फंक्शनल एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में हम एक और इनइक्वालिटी एंड दैट इज कॉची इनइक्वालिटी। तो इट कैन बी स्टेटेड, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ कॉची इनइक्वालिटी। तो कई बार इसको कॉची भी पढ़ते हैं या कॉशी भी पढ़ते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। स्टेटमेंट ऑफ दिस inequality is let x be x1 comma x2 so much comma so and so xn, mean that n dimensional. So x जो vector है that is n dimensional and y is also n tuple, that is y1 y2 so and so yn. We n tupled of scalars. So x and y are the vectors, what the components are the scalars. Don't confuse with this. And the norm is defined like norm of x is equal to square root of summation. It is like this. It is like square root x1 mod square plus x2 mod square plus x3 mod square plus so and so xn mod square whole under root. This is the defining of norm x. Then summation varies from 1 to n. Mod of xi yi is less than equal to summation norm of x into norm of y. But this mean it means that ki x1 y1 plus x2 y2 plus so and so xn yn is less than equal to under root x1 square x2 square plus so and so mod xn square into square root of y1 square y2 square plus so and so yn mod square. I hope you understand this. So this is the sometime हमें टेंसर में ये चीजें इंटरप्रेट करनी नहीं आती ढंग से. So this is the meaning of this कि इन स्केलर्स का जो एडिशन है that will be less than equal to square root of this quantity into this quantity. Norm of x का मतलब तो यही हुआ ना, norm of y. This is the meaning of norm x. Same line पे norm y define. So now the proof part में देखें, अगर यहाँ पे हम x और y की वैल्यू 0 ले लें तो 0 टुपल्स, तो इसके बाद सारे पॉइंट्स y1 y2 up to yn ये भी 0 होगा, x1 x2 xn भी 0 होगा. तो ऑफ कोर्स यू कैन से कि दिस साइड दिस 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0 आएगा. So 0 is less than equal to 0. That is trivially true. So then the result is trivially as the both sides are closest to 0. Okay, now we take x and y is not equal to 0. तो in that case हमने यहाँ पे एक डिफाइन कर लिया ai. तो mod of xi divided by norm of x whole square और yi is mod of yi divided by norm of y का whole square. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो yi और ai और bi है they will be positive. So each ai and bi are non-negative real integer numbers. तो हम ये +1 लेवल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो ऑलवेज अर्थमेटिक मीन से कम रहता है. So by using this, so
This is the geometric mean. So square root of AI vi is less than equal to a1 plus ai plus bi divided by 2. So this is arithmetic mean. तो यहाँ पे ai और bi का जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ठीक। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सम अप करेंगे। सम अप जब करेंगे तो अगर मैं इस चीज को लिखूं तो इस चीज आएगी मेरे पास x1 y1 डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू y1 1/2 x1 स्क्वायर डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस y1 मोड का स्क्वायर y नॉर्म का स्क्वायर। दिस वन। फिर i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x2 y2 x नॉर्म y नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1/2 x2 mod square x norm square y2 mod square over y norm square। ये अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम कहाँ तक, क्योंकि i इज वेरी फ्रॉम 1 to n। तो लास्ट में सो करके जो लास्ट हमारी चीज आएगी दैट विल बी अप टू yn। सो yn x and yn mod divide by norm of x norm of y equal to 1/2 norm n mod of xn square divide by norm of x square plus yn mod square divide by norm y square। ये अब क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे। तो सम करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर तो सेम है, सभी का डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे। तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, दिस प्लस दिस, सो दैट वी कैन बी राइट लाइक xi yi and I varies from 1 to n। so this is the, so in between you can say this का एक स्ट्रिक्ट स्टेप लिखिए। सेम लाइन पे इस पे देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज आएगा और नॉर्म ऑफ एक्स, सभी का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमिनेटर में वो पास बनेगा समेशन xi और का स्क्वायर एंड i वेरी फ्रॉम 1 to n। उसी लाइन पे समेशन yi mod का स्क्वायर डिवाइड बाई y नॉर्म का स्क्वायर and I varies from 1 to n like this। ओके। और अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो टर्म है, इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इट विल बी नॉर्म ऑफ एक्स। ओके। सो यू कैन सी कि अगर हम नॉर्म ऑफ एक्स की डिफाइनिंग देखें तो यहाँ पे अगर हम ये जो स्क्वायर, ये जो आपका 1/2 है पावर, और दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं तो इट विल बी स्क्वायर और यहाँ पे हट जाएगा। तो इट मीन दैट नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी समेशन xi mod square and I varies from 1 to 2। इट मीन दैट ये जो क्वांटिटी है इसको हम नॉर्म एक्स को लिख सकते हैं। सेम लाइन पे इसको नॉर्म वाई को लिख सकते हैं, बट इसको नहीं लिख सकते हम। आपको लग रहा होगा कि यहाँ लिखा तो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। ओके। सो आफ्टर दैट व्हाट वी गेट, तो यहाँ पे तो नॉर्म कट ही गया, फिर एक्स नॉर्म बाई नॉर्म आर, यहाँ पे 1 + 1 2 कैंसिल हो गया। सो वी लेफ्ट विद दिस। तो यही हमने प्रूव करना। तो यू सी दिस इज वेरी सिंपल वन, और फिर भी कोई अगर डाउट हो यू कैन आस्क मी। सो दिस इज Cauchy inequality। सो ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। सॉरी, Cauchy inequality का लेक्चर हम पूरा छोड़ रखते हैं। ओके।